everyone. I am Aman, your host today to host our session live from Friends for Life on our beautiful and very powerful mantra called You Are Enough or I Am Enough. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Thanks for joining us today, and we hope that we bring a really great show and conversations to you today for next 30 minutes. Now I will invite my friends to the studio, Sujata, Tukinder, and Aman, so that we can join together into the conversations with you. Hello, Let's give a couple of minutes to join, to have our viewers join today. How are you doing, Sujata? I'm good. Better to see you. Feeling better now, seeing all of you. That's awesome. Aman, how's your day today? So, today's my off day with Hardik. Today's your me time. This is Yes, today's my me time. Yes, it's your me time. Rupinder, how's your detoxing Enjoy going? soup and market. Oh, I am feeling very low in energy. That's all right. Your body will get used to it. Yes, but ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ That's the signs of detoxing. Yeah, your body is getting used to new norm. Okay, let's start people live with us. We are 8 people live with us. Thank you, everyone. So, thanks for joining us. If you have any questions or comments, or you want to add your life story, life experience, you want to share with our viewers today, please add to the comments. And if you have any questions, we will try our best to answer today. And like last session, we got really great feedback, and a lot of people joined us in the conversation. So we appreciate your time that you're giving us. Like last time, we will speak all three languages, English, Hindi, and Punjabi. So we will do our best that all of you can enjoy the conversation today. The session today is about the power of self-acceptance. I think this is one of the things that we learn very last and in a very hard way. I think sometimes our upbringing is like that, or our culture is like that, that self-acceptance or self-recognition is not widely recognized or talked about. And this is what we want to talk about today, I Am Enough. To start our conversation today, I will read one of the quotes because I'm famous for butchering quotes. So I really want to read it so that I say it as it's written. This is a quote by Brené Brown. Owning our story and loving ourselves through that process is the bravest thing that we will ever do. I did not understand this when I first read it, but think about it, that what's the bravest thing you can do is recognizing yourself. And that's how we got to the point today of conversation, I am enough. I will tell you my story. I have OCD when it comes to emails in my inbox. I had to finish them all. I was running my life by to-do list, and I had to finish all on my to-do list. I was chasing more and more and more and more, more success, more qualification, more recognition, more salary package, and it was never-ending scenario for me. What happened at the last, it was not fulfilling or satisfying for me. It was actually exhausting and sometimes very depressing because I was not getting where I want to be. And one day I realized that what am I chasing for? What is my life purpose is? The life is not a checklist that you can just keep checking boxes off or adding more and more on it. So I was actually trapped in my mindset of more. I was trapped in it. So let me ask you all this question. Are you trapped in the mindset of more and more? If you are trapped in mindset of more and more, what are you going to do differently this year so that you can actually achieve satisfaction and happiness in life?
is more and more giving you happiness in life? That would be the question as well that you would like to ask yourself. And that's the question we, for our friends, asked ourselves, is that what is the purpose of our life and how do we get to the satisfaction and self-acceptance? And I think that's why the we are, four of us are so connected, because we can openly and honestly have conversation around it, and we can actually challenge each other as well when we are trapped in that mindset, question each other, challenge each other's thoughts. And we want to share this journey with you today, and we want to share some of the strategies with you today. How did we achieve our life happiness and satisfaction by accepting and recognizing that I am enough. I actually don't have to prove it to anybody else. So I will start with Rupinder first because she's low in energy. So Rupinder, do you want to share your life journey? How did you come to self-acceptance and recognition? Absolutely, Aman. I will reply in your way. I would like to start with the one quote, and that is, realize deeply that the present moment is all you ever have. It was during my daily commute that I found clarity. I remember ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਰਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਪਨਾਂਗ ਟੂ ਕੁਆਲਾਲੰਪਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪੀਸ ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਫॉर ਮੀ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਡੇਲੀ ਕਮਿਊਟ ਦੈਟ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਜਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ cherish these moments rather than dreading them. Okay, and this shifts allow me to appreciate the present and instilled a sense of fulfillment in my everyday journey. And moreover, snacks on the commute aren't too bad either. And even Delhi traffic also. Yes, I mean, If you it's are in present dreadful. moment in the Delhi traffic, that's the best thing Uh, you can do. yes, Yeah, healthy city traffic is like snacks. that too. Yeah. That's a beautiful story. I actually, I think I saw the documentary about Rachel as well recently. And I can relate to it too. I commute for work, and Sydney traffic is as worse as probably daily traffic. Um, and before, it doesn't take me long to get to my home to office. I go by metro, and it's only 8 minutes away. But even those 8 minutes, I used to take meetings or I used to check emails. But I actually stopped doing that now. Like the 8 minutes for myself, I can give that 8 minutes to me, right? So I actually don't check Yes. my emails or don't attend my meetings now. Um, if I'm not just sitting still, then I'm just messaging, checking Have to on do with my something. friends. And our friend Aman in Melbourne, I actually talk to her on the way to work most of the time. So that gives us the I think the me time also, but also the social connection too. Yeah. That helps us to bring to planet Earth, I would say. Sujata, what are your strategies that you want to share with us today? Yeah. And for me, like self acceptance, if we talk about self acceptance started when I, stopped waiting for the perfect moment, you know, and started Wow. practicing mindful action. Because ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਮੋਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਜਿਸ ਮੋਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ Yeah. ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੌਬਸ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੋਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਇਟ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੋਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਵਨ ਖਾਣਾ Perfect. ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੈਲਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸਟਾਪਡ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर द परफेक्ट मोमेंट कि परफेक्ट मोमेंट कुछ नहीं होता आई हैव लर्न दिस थिंग दैट इज नो परफेक्ट मोमेंट एट ऑल वट एवर यू हैव इज द एज रुपिंदर सेट दैट all you have is the present moment with you ठीक है so like
सो मेरी स्ट्रेटजी यही है कि माइंडफुल एक्शन, चाहे वॉक कर रही हैं तो आई विल वॉक ओनली, Yes. बिकॉज आई यूज टू बी मल्टीटास्कर। बहुत ही मैं प्राउड ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ आई एम ਮਲਟੀਟਾਸਕਰ, है ना। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਲੋग ना 2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਦੈਨ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਡਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ walk, when I take a sip of the tea, I just do that. When I brush my teeth, I do कि मैं पहली बार कर रही हूँ उस चीज़ ਨੂੰ। सो दैट्स बहुत सिंपल जी चीज़ लगती है, बट दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट यू कैन डू विद यू। appreciate the present moment. And second thing is setting realistic goals, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ how we started our spark newsletter by setting realistic goals. So that's the two things that work for me. That's beautiful. I think you were the first one to get there. You were our role model. And I think talking to you, I got there too, right? So ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰ ਲੋ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ, ਹਨਾ? There is no next ਅਗਲੇ life. When we live in ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ future. ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ ਅੱਜ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੇਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ Yes. ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ Yes, exactly. Yeah. ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। So that's the fulfillment of life, right? So why chase what you don't know? Why can't you cherish Yeah. what you already have? So Yes. and I think that's a beautiful thing that you just said. Like brush भी करना था ये सोच के कि पहली बार करना नहीं किया। That's hard to achieve. Um, and also to be honest with yourself and the goals that we will talk later, right? Yeah. So, I mean, what are the life moments that you cherish in your life? You want to share your journey to life self-acceptance? yes अमन। जैसे कि लाइफ में तो हमेशा यही रहा है कि भी जैसे तुम लोगों ने भी शेयर किया कि हमेशा भागम भाग ही रही है ना। पर मुझे लगता है कि लाइफ इज नॉट अ रेस, है ना। यू स्टॉप टेकिंग द वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। जब तक हम कोई भी काम अपना अपना 100% देके कर रहे हैं ना, मीन्स यू आर राइट, है ना। Yeah. दूसरों की वैलिडेशन Absolutely हमें correct. क्यों चाहिए काम के लिए, कि जो हम अपना ही 100% देके अपनी पूरी शिद्दत से उस काम को कर रहे हैं। तो एक तो मेरा यही रहा है कि जब से मैंने दूसरों की वैलिडेशन लेके काम करना अपना बंद किया है ना, तब से लाइफ और इजी हो गई है। तो मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, और वो मुझे जब मुझे अंदर से पता है कि मैं सही कर रही हूँ ना, तो एक तो ये पॉइंट रहा है कि भाई अपना जो भी देना है अपना 100% देके अपनी पूरी हार्डवर्क के साथ करो। और दूसरे क्या सोचते हैं, क्योंकि दूसरे तो कभी खुश होंगे ही नहीं, है ना। स्टॉप प्लीजिंग अदर्स। Yeah. ये तो लाइफ है कि दुनिया क्या, घर वाले भी आपके काम से कभी भी खुश नहीं होंगे। तो इस तरह से कि दूसरों को प्लीज करना बंद करो, जो भी करना है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपना 100% करो, दूसरों की वैलिडेशन लेना बंद करो। जब से मैंने इस बात को फॉलो किया है, तो लाइफ काफी इजी सिंपल हो गई है। एक तो ये एक्सेप्टेंस मैंने सीखी है। दूसरा, हमेशा ही मैं क्या करती थी, आई ऑलवेज ओवरथिंक, है ना। जब Oh, मुझे ये भी पता था कि भी वो ओवर थिंकिंग क्या है ना, हमेशा आपको दैट लीड्स टूवर्ड्स योर नेगेटिव थॉट्स। yeah. सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी या सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड भी नहीं थी, जितना मैंने उसको ओवरथिंक कर करके उसको मैंने बना दिया, है ना। फिर इस पे Yeah. मैंने काम करना शुरू किया, ऑल्दो दैट्स नॉट गॉन। अभी भी मैं ये सब चलता है लाइफ में, पर फिर भी आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय दिस क्वालिटी कि किसी भी चीज को ओवरथिंक नहीं करना। जिस वजह से वो सिचुएशन है, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन या सिचुएशन, कोई भी जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस सिचुएशन के लिए, गो एंड स्ट्रेट टॉक टू दैट, टॉक अबाउट दैट Yes. प्रॉब्लम, टॉक विद योर फ्रेंड्स, टॉक विद योर फैमिली, है ना, टॉक विद योर स्पाउस, टॉक विद योर कलीग्स, जिस जो भी उस प्रॉब्लम का पार्ट है या समझते हैं आपको, तो उनसे आप अपना डिसीजन ले सकते हो, या उनसे आप शेयर भी करोगे ना, यू विल गेट सो मेनी सॉल्यूशंस फॉर दैट। Yeah. जो आप वैसे अकेले बैठे ओवरथिंक कर करके उस सही है। प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लिया था। एक तो ये चीज है। बिल्कुल। तो आई एम वर्किंग ऑन इट। अभी भी ये पूरी तरह से मेरी लाइफ से गया नहीं है। हर चीज को मैंने ओवरथिंक करना ही करना है और इतनी बड़ी बात बना लेनी है माइंड में ही
एक्चुअल में फिजिकली वो कुछ नहीं एग्जिस्ट कर रही होती, पर माइंड में ही मैंने उसको इतना लंबा कर देना है कि एक तो ये पॉइंट है कि आप ओवरथिंक करना बंद करें, दूसरा दूसरों की वैलिडेशन की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस चीज पे आप फोकस करें। तो ये 2 चेंजेस हैं जो मैं अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर भी रही हूँ, और मैं ये सारी चेंजेस या अपनी लाइफ में इन इसकी वजह से चेंजेस को मैं फील भी कर रही Remember, Aman, you always failed in exams before going to exams. हूँ। जल्दी जल्दी करी हाय करी Mind. मुझे आ पेपर है गया मैं पेपर है। लिख Always लूंगी. having so much हम्म, anxiety before going to exams. Most I of the time remember I spent in I washrooms. remember I remember one of our इस मामले च ਆਪਾਂ फ्री classmates, ਸੀਗੇ। Aruchika. She told me once that Aman मैं ना second आई रात मैं क्या कितने कहती सुपने च मैं क्या जे मैं सुपने च second आ गई मैं तो life मैं मर तो जानी. छाला मार रही होंगी। but Wait, that was a but different case. She got but depressed we Oh were my by it. God. I was going happy by it. Yeah, but we were that's very true. much present during the Very funny. exam. During the exam, we were very much present, Aman. Seriously. हम्म, Overthinking, I think that that's the great point you made about overthinking, right? Because we overthink so much. All of us work, and there's always restructuring going at work, right? So people are always going, oh, whether I will have a job or not have a job, where will I be? Where will my name in the box will be? And Yes. so many times people just lose their sleep over it. It's so such a of course a stressful time, but just overthinking that you won't be or you won't be in that box that you want to be. It's just not healthy then because you cannot move on. You can't be productive at work. And same thing goes at home. If you keep overthinking about some stuff, then you are not going to be happy in the life either. And you're making everybody around you miserable too. Sujata, the work you do, you have to be very self-disciplined about it. So what are you doing, like setting realistic goals? And then with social media these days, people are just living their life by likes, like views. How do Yeah. you deal with it? हम्म, Yes. Aman, before that, I would like to mention some comments that we're getting from our live viewers. Mini is there. I would like to show his comment on the screen. Mini is saying, others liking you is a bonus and loving yourself is the prize. That's Oh, very wow. true. ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ thank you ਫੋਕਸ Aman। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਦੂਜੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ हम्म, ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਹ ਬਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਬਟ ਫੋਕਸ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ true। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ like I mentioned earlier कि present moment I started appreciating the present moment पहले मैं बहुत केयर करती थी है ना कि like अमन said कि seeking validation from others ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੂਪ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀਕ ਕੇ ਕੁਝ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਕ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ Right। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਸੀਕ ਨਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੈਟ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖੁਦ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਟ ਅਗੇਨ we need to replace it with kind words है ना so that thing always worked for me कि ठीक है एक लेवल तक we need validation but खुद दा reality check अगर टाइम टाइम ते करते रवांगे that's enough because we are enough me I am enough है ना ते obviously self acceptance ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ you settle down self acceptance is not settling down it's owning as you said it's owning where you are while working towards where you want to be ਸੋ हम्म, ਸੈਲਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਾਂ that also दुनिया की you know परवाह will नहीं है. हाँ Improving but and self everything like acceptance that. is like true। I will do I'll own myself मैं अपनी responsibility लेनी है whatever I'll you do I will do it consciously appreciating the present moment that's what I feel is right no? No, that's so true because I have heard stories about people getting depressed. There was a study done in Australia that
the older generation is not that depressed as compared to the generation 18 to 24, even though they think they are very connected through social media, um, and the older generation is not connected through people to people through social media. But they are more depressed 18 to 24 because they are seeking validation in the likes and views on whatever their profile pictures are or whatever they're sharing, right? But they're forgetting the social connections that the older generation has. And our generation is very tricky. We have seen Yes. no technology to all of the technology, and Yeah. no social media to all social media. Still, we All are stuck in that yes. social connections. So our generation is stuck in that space. Where do we belong, and how do we seek the self affirmations? Rupinder, what do you do? How do you bring the positivity into your routine or your life if you are like feeling low energy today a little bit? What are you going to do? Okay, ਅਮਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਮਾਈ ਡੇ ਵਿਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਅਰਸ, enjoying nature। जो मॉर्निंग एनवायरनमेंट है ना ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਸ ਕਾਮ, that is your me time। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਉੱਠਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਮੀ ਟਾਈਮ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਔਰ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਮਨ। ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨਾ ਸਦਾ ਹੈ ਆਰੰਭ ਔਖਾ, ਹੋਵੇ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇਈਏ, ਬਿਨਾਂ ਹੌਸਲੇ ਚੁੱਕਣਾ ਖੰਭ ਔਖਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ Right. ਨੇ, ਹਨਾ? ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮਨ 12 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਅਮਨ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ। ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਫੋਨ, ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਮ। ਅਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲਸ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। How do you plan your life, and where you say this is enough, I'm happy? यस अमन, है ना? क्योंकि वो तो एक पार्ट हो गया है लाइफ का कि भी चलता ही रहेगा ये चीजें तो। पर हाँ, फिर भी अपने लिए सुबह जाओ, अपना टाइम पहले, अगर अपने लिए टाइम निकालो पहले सुबह ही, जो मॉर्निंग वाला, जैसे रुपिंदर ने भी बोला कि अगर हम अपना जो डे है ना अपने से स्टार्ट करेंगे, यू विल गेट एवरीथिंग इन टाइम और एवरीथिंग विल बी ऑन द ट्रैक।
सिर्फ एक सुबह उठ के थोड़ा-सा आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है और थोड़ा प्लान Yes. आउट करने की ज़रूरत है कि ये मेरा शेड्यूल रहेगा और फिर स्टिक टू दैट शेड्यूल। तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जो भी Mhm. चाहो वो आप विदिन नो टाइम यू कैन फिनिश योर वर्क, यू कैन फिनिश योर टास्क। तो ऐसे ही मेरा अपना भी शेड्यूल ही है कि अपना फिनिश करके कॉलेज का पहले ही प्लान्ड होता है कि ये काम इस तरीके से ये काम करना है। तो थोड़ी-सी प्लानिंग आपकी लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज़ कर देती है Mhm. ना? एक तो ये चीज़ है कि थोड़ा-सा आप प्लान करके चलो अपना फुल डे, तो यू विल गेट एवरीथिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो कोई हौच-पौच या इस तरह से कोई चीज़ होने की वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। फिर अगर Yeah. आप इस तरह से पूरा ठीक है, कोई ना कोई अप डाउन आ जाते हैं तो यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन आल्सो। तो ये चीज़ है। दूसरा, हमेशा ही मतलब एक और चीज़ है कि भी सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव थॉट्स, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, है ना? अपनी तरफ से जैसे जाओ, हर एक को हाय हेलो बोलना, तो ग्रीट करना। तो ये भी है कि Mhm. पॉजिटिव ऑरा अपने सराउंड आप बना के रखो, तो भी सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली सेट बैठनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा ये होता है कि एंटर करते ही या घर से निकलते ही जब तक जो भी है, जो कोई हाय हेलो ग्रीट करना, बड़े छोटे, Mhm. है ना? ताकि आप जो है एक पॉजिटिव एनर्जी से ही सराउंडेड रहें। तो वो भी एक बहुत मैटर करता है कि भी सुबह ही आपका जो दिन है वो एक पॉजिटिव एनर्जी से शुरू हुआ है और आप फिर सारी चीज़ें आपकी सेट बैठनी शुरू हो जाती हैं। और कुछ कर सकते हैं अगर लाइफ में कि स्मॉल टाइम फॉर यू, है ना? कुछ प्रेयर करना या 2 मिनट ऐसे देने कि अपने लिए सिर्फ प्रे करना, नॉट नॉट फॉर Mhm. आवरसेल्फ, जो भी आप चाहते हो, है ना? 2 मिनट ऐसा ज़रूर किसी को जिसे भी आप मानते हो, तो ज़रूर 2 मिनट हाथ जोड़ के आप प्रेयर करके जाओ अपने लिए, अपनी वेल-बीइंग के लिए, फैमिली की वेल-बीइंग के लिए, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको देती है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं मुझे अपना दिन पूरा सॉर्टेड करने में। Mhm. यही सारा चलता रहता है। You said something that say hi, hello to people on the way, right? So I'll share this story with हाँ, you. Um, Couple of years ago, we acquired a company, and I started going to the office, which was the office of other company. And I opened the door. It was like 8:30 in the morning. I was the only one from the company that acquired this other company, a very big company in Australia. And I opened the door. I said, "Good morning, everyone," and everybody just gave me a look. To date, बट यू people डिड योर पार्ट actually ना? हाँ। remember me that you are the good morning lady. हाँ, बट यू डिड योर पार्ट वेल, है ना? जो अपनी Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी है वो तुमने अच्छे से की, दैट्स व्हाई यू आर बीइंग रिमेंबर्ड बाय मेनी, है ना? तो Yeah, यही but है कि भी बहुत ज़रूरी है वो भी लाइफ में ना कि हर yeah, किसी को विश करना, जो मिल रहे हैं, जो जान रहे हैं, Yes, तो exactly. इससे भी आप मुझे लगता है कि एक और ये अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आप में आ जाती है, कुछ भी करने के ਹੁਣ लिए। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈਪੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰੇ। And हाँ। yes. सीरियसली, है ना? वही कि भी सोशल मीडिया कनेक्शन ज़्यादा हो गया, फिज़िकल जो सामने है, उसको हम एप्रिशिएट ही नहीं करते। जो आपके Yeah, रूम में बैठा है, उससे बात नहीं करेंगे। कोई भी है, ये तो बहुत कॉमन, सब लोग एग्री कर रहे होंगे कि 4 लोग कमरे में बैठे हैं, हर कोई अपने फ़ोन में बिज़ी है। हाँ जी, फिज़िकली हाँ, बात नहीं करेंगे, सोशल मीडिया वाले नहीं फ्रेंड्स क्यों करेंगे। चैट कर रहे हैं। हाँ, हाँ, है ना? या बिल्कुल नहीं ये करेंगे। चीज़ें एग्जैक्टली। भी आजकल बहुत मतलब मुझे तो क्लास में भी फ़ील होता है कि ये जो फ़ोन बच्चों के हाथ में आ गया है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी आ गई है उनके हाथ में। ओह, वही सबसे उनकी बड़ी पॉज़िटिव नैनी भी साइड है नहीं, पेरेंट्स के लिए। नेगेटिव I hope पेरेंट्स they के are लिए नेगेटिव not साइड सबसे है। बड़ी listening नैनी to है। you right now. हम्म, मैं तो कहती रहती And हूँ कि Aman, मैं सुबह ही एक अपना बॉक्स ले आया करूँगी, सारे अपने फ़ोन सबमिट कराओ, शाम को ले जाना। कर दो। now you are हम्म, behaving like a good हाँ teacher. I hope they are not हाँ, listening, your student. है ना? Aman, I would हाँ, like to mention some comments from our या lovely viewers. One is from Ashok from Stack Shift. We at Amazon say that it's always day one, so treat each day as it's a new day at Amazon. ओह Like नाइस। we it's already always day one. mentioned that do that it's your last day or do it as it's your first day. फर्स्ट Yeah, डे, very good. यस। Good And one. one more very nice comment we have, that's from Trade Fast. Seeking validation is natural. We all want to feel seen, appreciated, valued, but relying too much on external validation can make your self-worth dependent on others' opinions, which can be unstable. That's very true. That's very Yes, Thanks true. दैट्स for ट्रू। lovely comments. Yeah.
Hmm. Thank you. Sujata, one of the question we have received is how Okay. did you set up the goals to go and launch the Spark and the sessions that we are going live? So how did we come up to it? Yeah. Like we all already mentioned that set realistic goals. ये नहीं कि ठीक है ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜਾਣਾ ਹੈ, like we discussed na कि Spark newsletter, we started with small steps, like starting from our Spark newsletter. Then next milestone was going live, and you won't believe that we are going live without scripts. So ਕਈ Yes. ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਜ਼ਨ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਥ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਥ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਟ ਸਹੀ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਨ ਆਰ ਕੇਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਅ ਸਪਾਰਕ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ, one edition at a time, and then going live ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ we pushed each other to come out of our comfort zone to come live, and that without scripts, because we don't have much time to practice and rehearse amongst our daily chores. So that was, I would suggest, ki start small and start with realistic goals, small goals. And as you mentioned, Aman, that break down your uh, vision, break down your objective into small steps. That's Smaller. what we Yes. applied. At least you Uh, start. yes. Yes, yes. Yeah. I remember, Sujata, when you were pushing us to come out of our comfort zone. I started doing videos and doing videos without the scripts as well. So you probably all probably seen our videos on our channel as well. Um, and trust me, recording a video is so hard. Like how many times I had said to myself, I have no idea what I'm talking about today. And Aman, you did audio recordings. I don't know how you did audio Yes. recordings. I tried my best, but I was not able to do it. I was easy on Mm. the video, but not on the audio. And Rupinder, you also tried the audio recordings as well. But here we are out of our comfort zone, talking to you live. I think we were judging ourselves very harshly, and that's where Yes. Yeah. we have to get comfortable with. Like, okay, what are we judging? It's not easy to go or talk on a camera without the scripts. We are not a professional news broadcasters or celebrities who are going with Yes. the camera. It's Yes. just us four friends talking to our friends in the world. Um, and as Sujata said, it was really hard. It's really hard for us to rehearse together because we are in a different time zone and we have our commitments as well, personal commitments and our professional commitments. So I think we are doing a good job. Please give us feedback, add your comments. The article that we are talking about today, the topic that we are talking today, we have this article in our November edition. That was our first edition. We will put the link of that article in our description box. But if anybody wants to join us live in the conversation, please email. There is email uh, email address scrolling under this live session, so you can email us. We will actually add to the description box as well. So we are on top of our 30 minutes, and I will just say, breathe and say loud, I am enough, and enjoy your Yes. life, live to full, Yeah. and don't care what others have to say. Don't overthink. Change your negative thoughts into positive thoughts and to achieve the satisfaction in your life. So thank you so much for joining us. Thanks, Rupinder, Sujata, Amin, for joining today Thank for you. these Thank you so quotes much. Thank and you. Thank conversations. you. Bye. Thank you, Yes. It's time to everyone. go. Okay. See you next week on Bye. Sunday. Yeah, Yeah, Bye. sure, we will Yeah. Aman. be We are live waiting. next week on our wellness topic Wellness. that Yes, will wellness share Oh, topic. soon. okay. Yeah, so if you're Yes. struggling with the self acceptance, one mindful action, as we said, one small win, and one kind thought at a time. So we'll see you live next week.
So we'll share detail, as Aman said, we'll share details soon. So please keep commenting and keep giving your feedback. That matter most to us. Yeah. And don't forget to, Thank that's you. Thank YouTube you so much. visual. Don't forget to like, share, and subscribe. We need that. Yeah. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye.